हेलो फ्रेंड्स। अभी हम एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं सिक्वल सर्वर, सिक्वल और माई सिक्वल में। ओके। इसका डिफरेंस हम दो चीज़ों पे देखेंगे कि डिफिनीशन क्या है, फंक्शनलिटीज़ क्या है और पोर्टेबिलिटीज़ क्या है इसके। ठीक है। तो व्हाट इज़ एसक्यूएल? सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। एंड डिफिनीशन क्या है? एसक्यूएल इज a standardized language used to managing relational databases. Okay, so every relational database has SQL server, SQL. Okay. नाउ फंक्शनलिटी पर ध्यान देते हैं तो क्या एसक्यूएल इट सेल्फ नॉट अ डेटाबेस। ओके, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट अलाउज यूजर टू interact with the managed databases. It consists of different type of commands such as DML, DDL or DQL, DCL. Okay, and portabilities क्या है? SQL is a portable across various database systems. It is used as a standard language to communicate with relational databases regardless to the specific database management system. ये डिफिनीशन डिफरेंस है। ठीक है, जो आपको किसी भी डेटाबेस का कम्युनिकेट कराने में आपको इजी होता है। राइट कर सकते हैं, आप ज्वाइन लिख सकते हैं। ठीक है, विथ मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल RDBMS। Now coming to the MySQL. So MySQL specific relational database management system, this is the RDBMS. Okay. And functionalities क्या है इसके? It is a software system used to manage database, storing and retrieving data as requested by application or end user. Okay. And MySQL uses SQL as its query language to manage database itself, database managing its databases. क्या ऑफर फीचर्स क्या है? ऑफर वेरियस फीचर्स लाइक हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटीज, robust transaction support, multiple storage engine like InnoDBN. Okay, और ऑनरशिप किसकी है इसके पास? माई सिक्वल इनिशियलाइज डेवलप्ड बाय द Swedish company, that is SQL AB. It is owned by and managed by Oracle Corporation after acquisition of Sun Microsystem. ये अभी आप डिफरेंस जो देखा आपने माई सिक्वल एंड माई सिक्वल के बीच में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ये बेसिक डिफरेंस था सिक्वल और माई सिक्वल में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।